कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वाइवा में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कंपनी इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, तो क्या क्या चीजें हैं, लेट अस लुक एट देम क्विकली। छूट जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। आई ऑलवेज गिव अ रीकैप देन आई कंटिन्यू टू न्यू टॉपिक। तो कंस्ट्रक्टर, दीज आर पब्लिक फंक्शंस, मींस प्लीज रिमेंबर कंस्ट्रक्टर्स शुड बी देयर इन पब्लिक सेक्शन। हर एक शब्द जो यहाँ लिखा है वो इंपॉर्टेंट है और उसको भूलना नहीं है। डू नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर्स इन प्राइवेट सेक्शन, फिर वो बेचारे कॉल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बना सकते हो मगर बनाना मत, ऐसा मत कर देना। कंस्ट्रक्टर कहाँ बनेगा? पब्लिक में। ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय द कंपाइलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंपाइलर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज रन ऑन अ मशीन एंड यू ऑल नो वंस प्रोग्राम कंप्यूटर डज नॉट फॉरगेट थिंग्स। इसको भूलने की बीमारी नहीं है, वो इंसानों को होती है। तो इसको कंपाइलर अपने आप कॉल किया करेगा, आप चिंता मत करिए। इसका काम, कंस्ट्रक्टर का सिर्फ एक काम हुआ करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक काम, दैट इज इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास ऑफ विच इट इज अ मेंबर। जिस क्लास का ये सदस्य है उस क्लास के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना ही इसकी ड्यूटी है, बस। अगली इंपॉर्टेंट बात, आप सेट वैल्यू फंक्शन बनाते हो, आप नाम रख सकते हो सेट वेल, सेट रेडियस, एनी नेम यू कैन असाइन, बट व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्टर, योर कंस्ट्रक्टर हैज एग्जैक्टली सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। अभी मैं आपको कोड में भी दिखा दूंगा। स्टूडेंट क्लास है, इसमें देखो ये राउंड ब्रैकेट यानी फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो कि पब्लिक सेक्शन में हो और जिसका नाम वही हो जो क्लास का नाम है। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। या फंक्शन का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो ये क्या है? ये स्पेशल फंक्शन है जिसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहेंगे। तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? कंस्ट्रक्टर्स ऑलवेज हैव एग्जैक्ट नेम एज दैट ऑफ द क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। नो रिटर्न टाइप, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता। आई कैनॉट राइट एनी रिटर्न टाइप और वॉइड हियर। कंस्ट्रक्टर है तो कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ना इंट, ना फ्लोट, ना डबल, ना वॉइड। क्यों रिटर्न टाइप क्यों नहीं होगा? इसका काम कुछ रिटर्न करना है ही नहीं ना भाई। योर कंस्ट्रक्टर इज नॉट सपोज टू डू रिटर्न जॉब, its only job is initialization. It needs to initialize data members. तो फिर जब काम रिटर्न का है ही नहीं तो रिटर्न टाइप क्यों रखें? इसीलिए कंपाइलर में क्या प्रोविजन है? कोई रिटर्न टाइप नहीं, वॉइड भी नहीं। क्लासेस कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर। देखो एग्जांपल, एक, दो, दो कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं ना, दोनों का नाम स्टूडेंट है, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास का नाम भी स्टूडेंट है। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके ब्रैकेट्स खाली हैं, एक ऐसा जिसके ब्रैकेट्स भरे हैं, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। मगर अभी क्या है, क्लासेस कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोडिंग एग्जिस्ट। जब एक से ज्यादा होंगे तो इसको ओवरलोडिंग ही तो कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन नेम इज सेम, व्हाट इज डिफरेंट इज द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। 0 आर्ग्यूमेंट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स। So don't you think this is function overloading? Yes, it is function overloading. This is polymorphism. This is constructor function overloading. पूरा नाम क्या हो गया? These are constructors. Constructor function because of round brackets. Constructor function overloading. It is possible. तो यही स्लाइड में लिखा है। तो आई थिंक ये जो 5-7 पॉइंट्स हैं ये आपको याद रहने चाहिए और ये कुछ कठिन पॉइंट्स नहीं है। Any questions till this point? सर डाउट है। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। सर जो हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आपने 2 कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं, स्टूडेंट के 2 बनाए हुए हैं, जी उसमें से वो किसको इनिशियलाइज करेगा? बेटा, ये देखो क्लास में क्या चीज है आपके पास? 2 डेटा एनरोल है। मेंबर्स, एनरोल और यस सर। एफनेम। देखो उसी को यस तो सर। इनिशियलाइज कर रहे हैं, एनरोल ओके और उसको इनिशियलाइज करने के लिए। ओके ओके। दूसरा वाला किसके लिए सर? दूसरा वाला स्टूडेंट। बेटा, आप मेन में जब कॉलिंग करेंगे तो आप वहां से हो सकता है ना 10 और स्पॉट भेजो, जैसे पहले भेजते थे। ओके ओके 10 सर। किस में आएगा? ई में। स्पॉट किस में आएगा? इसमें। तो ओके आपने सर। मेन से जो वैल्यूज भेजी वो यहाँ पहुंच जाएंगे। ओके सर। ठीक है ना? आपका मेन अगर है तो ये we are recording all sessions for you students, and very soon we will be putting all these lectures over our YouTube channel so that those who miss the class can attend the sessions there. वो पढ़ सकते हो, फिर questions पूछ सकते हैं आप। Fine. So we were discussing constructors. If you look at this example, in this particular example, just pay attention to the line, to the very first line in the public section.
We have written a name of function student, and if you concentrate, the name of class again is student, means it is a constructor function, because I have mentioned that constructors are the functions that bear same name as that of class. The constructor shown here, the first constructor, the first line within the public section where my cursor is moving, this is a special constructor with parenthesis being empty. This is called default constructor. Means we are not passing any value to this, but still it will do some initialization job for us. What it is going to do when we'll call this constructor, it will create an object, and that particular object will have, sorry, will have default value for enrollment number is 10, and default name for the student will be James. Similarly, we have another constructor that takes up two arguments. So this is called an argument constructor, parameterized constructor. This one is without parameters. The second one is with parameters, and that too two parameters. One is of integer type, the other is of character type. This example we have already discussed. In this class, in addition to two constructor functions, it has another thing, that is read value. This is required. We discussed what is the purpose of read value also in the previous session, and we created two objects for this student class, s1 and s2. While creating s1, we never passed in any value, so default values will be picked up, and default name for our first student will become James, and roll number will be 10. But for the second instance, we are passing values that we feel are okay. So we have passed in 20 and Scott. So second student will have enrollment number 20, and the name of second student will be Scott. Then moving further, let us discuss another example. Here on this slide, you have a class distance. We all know that in order to measure distance, the metrics that we can use can be centimeters and meters. But in addition to centimeters and meters, we can also measure the distances in feet and inches. So if you look at the class, we have taken two data fields in the class in the private section. One is feet, the other are inches. And in the public section, we have a constructor function. Why constructor? Because if you compare it with the name of the class was distance, and in the public section, we are creating a function with the same name. The name is same as that of class, so it becomes a constructor function. A special constructor function for which parenthesis is left empty. This is called no argument constructor, or you can say this is default constructor of the class. Whenever you will call this particular constructor, it will initialize the objects with zero values. Means feet will become zero, as well as your inches will become zero. Is this understood? Look at the second constructor shown. This is taking up two arguments. One is feet in inches, and the other value is feet in inches are the arguments. Feet is in int, and inches are in float. So it will do the initialization job, because we all know that constructor has only one function to perform. The job of constructor is initialization. Now let us look at other functions. You have any question, you can ask, or else look at this function get distance. The job of this particular function is to read in values. Our class that we have created have two data fields. One thing is initialization. Initialization of these two data fields, feet and inches, will be taken care by constructors. But other than initialization, if you wish to read in values, so we have a function that is performing that reading operation. The name given to the function is Getdistance. You can name it like read distance also. You can change the name. You can give it a name like read distance. वो आपकी मर्जी है. Function names you can decide on your own. The job that this function is performing is it will give you a message on the screen, enter feet, and will read in the feet value. Another message will be enter inches, and inches will be read in. Similarly, once you are done with the reading part and initialization part, whenever you feel like displaying the values, showcasing the values, so we have appropriate function showDist. The name of this, you can name it like showVal, showDist. You can decide the name the way you want. And we have feet and inches being displayed here. Any question anywhere, if you are confused, anything you wish to ask, you can ask. Else we'll look at the main function, how
main function is to be designed. It's a very popular example, distance class example, and very soon we'll be learning a chapter on operator overloading, wherein I'll teach you how to overload your binary plus operator. So while overloading that binary plus operator, we'll use this example again, this distance class example. So you need to pay attention to this distance class. I hope the declaration of class, declaration of constructors, and of the functions should be clear to you by now. If you do not have question, then look at main function. Inside main, we have created one object for the distance class. This object is d1. When you create an object d1, have you passed in any value here? While creating d1, we have not passed in any value. We have simply written d1, which is name of the object. But while creating d2, we are passing two values. One is 5, the other is 10.25. Fine. But let us come back to this line, distance d1. Since at the time of creating d1, you are not passing in any values, so which constructor function will come into action? The first one, the one that we designed for no values. Means this function will be called, and the default values for d1, feet will become 0, inches will become 0.0. What I mean to say is d1 objects has feet and inches. So d1 dot feet will become 0, d1 dot inches will become 0.0. But in case of d2, since you have passed in two values 5 and 10.25, d2 dot feet will take up value 5 and d2 dot inches will take up value 10.25. तो d1 के लिए क्योंकि आपने कुछ भेजा ही नहीं है, आपने कुछ पास ही नहीं किया है, तो d1 ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कंपाइलर क्या करेगा? वो कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. हमने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप कॉल नहीं करते हैं, उसे आपके लिए कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल करता है. कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन which is called automatically by the compiler. Now question is when it is called? At the time of creating objects. Whenever you create an object, constructor is called. It gets called. Compiler does that for you. आपको कहीं ऐसा नहीं लिखना होता. आपके देखो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है? Name of the constructor is distance. Fine. Name of the function is distance. So in main, we do not need to write d1 dot distance. जैसे शो फंक्शन को कॉल करने के लिए लिखना पड़ता है ना d1 डॉट शो डिस्ट, बट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स वी डू नॉट नीड टू राइट d1 डॉट डिस्टेंस. वो डिस्टेंस अपने आप कॉल हो जाता है. वो फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है, इसीलिए तो स्पेशल बोल रहे हैं. कंपाइलर आपके लिए उसे कॉल करेगा और उसके अंदर जो काम आपने लिखा है वो काम हो जाएगा. आपने काम क्या लिखा है? आपने लिखा है d1 की जो फीट हैं और d1 के जो इंचेस हैं उनको 0 सेट कर दो, वो कर देगा. ठीक है. And in this case, since we are passing in values, so which constructor will be called? The second one. And whatever values you have passed in 5 and 10.25, 5 किस में पहुंचेगा? 5 ft में आ जाएगा. 10.25 will be stored in in. This in will be copied to inches and ft will be copied to feet. So your object initialization I think is should be clear to you. एंड देन यू कैन डिस्प्ले दी ऑब्जेक्ट कॉन्टेंट्स. ये यहाँ गलत लिखा है, इसको d2 होना चाहिए. d2 डॉट शो डिस्क लिख लीजिएगा. दिस लाइन ऑफ कोड शुड बी d2 डॉट शो डिस्क. इफ यू राइट d1 डॉट शो डिस्क then what will happen? This will also show you 0 0. This will again show you 0 0 because you have not changed the object. So this is inadvertent typing mistake. We should have written it like d2 dot show disk. Any questions in this example? You please solve this example whenever you get time today, so that while learning the concept of operator overloading, we'll be using the same class, and then you will not be confused about distance class. It's a very famous class. Now, let us modify the question. We all know, we have just learned what is distance class, what all data members it has, and the constructors and other required functions. Let us modify that class and add a function that accepts two objects as arguments and add their values, store the result into the third one. Now what do I mean to say? I mean to say that you are supposed to create three objects, d1, d2 and d3. d1 and d2 you have just created. You have seen that we have already created d1 and d2. In addition to these two,
we need to create one more object D3. Fine. And what I want is the result of D1 should be added to result of D2 and both added up values should be transferred to D3. मतलब इसमें एक दूरी है, इसमें एक लंबाई डाली गई है फीट और इंचेस में, D2 में भी कुछ डाटा आएगा, दोनों के डाटा को ऐड करना है और एडेड अप वैल्यू को किस में डालना है, D3 में डालना है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे मेन फंक्शन दिखाता हूँ। देखिए, लुक एट मेन, you have to create D1, you have to create D2 and D3. So D1 will be created using 2 argument constructor. Similarly D2 will be created using the same 2 argument constructor. इसमें क्या है, feet is 5, इसमें feet is 6, then we have inches 6 and 8. So you need to add these two values, these two distances are to be added up and the result is to be moved to D3. उस काम को करने के लिए आपको एक एडिशन वाला फंक्शन बनाना है। ये देखिए, नीचे स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस फंक्शन एड डिस्टेंस फंक्शन अगर ये बना हुआ हो तो इसे कॉल कौन करेगा, D3. एंड व्हाइल कॉलिंग दिस फंक्शन व्हाट हैव आई पास्ड इन D1 and D2. What are D1 and D2? D1 and D2 are objects. So your topic teaches you how to pass ready-made objects into a function. Am I right or not? In add distance, we are attempting to pass two objects, both objects of the same class distance. So first of all, you need to create objects, then you need to pass them to the function. Now who is going to write the body for this function? It's not a ready-made function. Add distance is not a ready-made function. Rather, your distance class is not a ready-made class. It is your responsibility to create the class. So it again becomes your duty to write the body for this add distance function. Only thing is, sir, how to write the body for this function add distance? तो इससे पीछे वाली स्लाइड पे जाते हैं. Here we have this add distance function. Fine. The very first line, add distance, you can clearly see that in the body, in the parenthesis, I have declared two objects of the distance class. First object is di, second object is dj. मैंने यहाँ di और dj नाम के दो ऑब्जेक्ट के नाम रखे हैं, di और dj. अब di में वैल्यू कहाँ से आएगी और dj में वैल्यू कहाँ से आएगी? तो आप देखिए, आपने जब एड डिस्टेंस कॉल किया, आपने यहाँ से क्या भेजा, आपने यहाँ से d1 को भेजा है और यहाँ पे क्या भेजा है, d2. Since you have passed in d1 and d2, what are d1 and d2? Objects. So if I pass an integer, I need to receive it in an integer. If I pass a float value, I need to receive this value into a float container. मतलब यहाँ से जिस प्रकार की वैल्यू को आप भेजते हैं, जब उसको रिसीव करने की बात आती है तो आपका कंटेनर भी तो वैसा ही होना चाहिए. अब वहां से आपने ऑब्जेक्ट भेजा तो यहाँ रिसीव किस में करेंगे उसको, ऑब्जेक्ट में. D1 को किस में रिसीव करेंगे, di नाम के ऑब्जेक्ट में. D2 को किस में रिसीव करेंगे, dj ऑब्जेक्ट में. क्या ये बात समझ में आई है या कोई डाउट है किसी को? What we are learning in this example is passing objects into a function. Passing objects to a function कैसे किया जाता है वो हम सीख रहे हैं. If you have any questions, you can ask. अब यहाँ इंचेस की बात करें तो ये एक लॉजिक लगा हुआ है इंचेस के बारे में. ये एक्चुअली क्या है बेटा, यहाँ ध्यान से देखो. आप 5 को 6 में जोड़ोगे तो 11 फीट हो जाएगा, मगर जैसे ही आप 6 को 8 में जोड़ोगे तो 14 इंच हो जाएगा. अब मैं आपको कहूँ 11 फीट 14 इंच, तो ये ठीक नहीं लगता. 14 इंच कुछ नहीं होता, 14 में से तो 12 हट के फीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था ना. 12 इंचेस मेक्स अ फीट. तो जब आप 14 इंच बोलोगे, 6 और 8 को जोड़ोगे तो 14 इंच हो जाएगा. 14 इंच नहीं बोलेंगे हम, 2 इंच बोलेंगे और 5 और 6 क्या हो जाएगा, वो जुड़ के 11 से 12 बन जाएगा. मतलब सही जवाब होना चाहिए 12 फुट 2 इंच. ये बात कितनों को समझ में आई? मेरे ख्याल सबको आई होगी. 11 फुट 14 इंच नहीं बोलना आ गई ये बात है ना. 11 फीट 14 इंच नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, 12 फीट 2 इंचेस. वो कैसे, इस लॉजिक से. जो लॉजिक यहाँ लिखा है उसको ध्यान से देखो. कह रहा है इंचेस अगर 12 से ज्यादा हो, एक यहाँ राउंड ब्रैकेट मिसिंग है, वो लगा लेना अपने आप, पीपीटी में मिस हो गया है. इंचेस अगर 12 से ज्यादा होंगे यानी 14 होंगे तो हम क्या करेंगे, इंचेस में से 12 घटा देंगे, तो इंचेस कितने रह जाएंगे, 2, और फीट को 1 से बढ़ा देंगे.
ये मैनिपुलेशन करनी जरूरी है, वरना ये जो फीट इंचेस है ना वो क्या सेट हो गए थे, 11 था 11 और ये आ रहा था 14, 11 और 14 इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर शुड बी फीट को 1 से बढ़ा के 12 करो और इंचेस को 12 से घटा के 2 करो। उसके बाद आप जब D3 को शो करोगे तो आपकी स्क्रीन पे सही आंसर आएगा 12 फुट 2 इंच। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रक्टर्स। व्हेन वी हैव अ कंस्ट्रक्टर वी शुड ऑलवेज हैव डिस्ट्रक्टर्स। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का दूसरा नाम डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं आपको मैं यहीं पे दिखाता हूं आपकी क्लास में, जहां पे हमने कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं। देखिए मैंने यहाँ साइड में डिस्ट्रक्टर लिख दिया। होगा क्या, क्लास में आप आएंगे, आप प्राइवेट सेक्शन में डेटा, पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर के बाद या कंस्ट्रक्टर से पहले ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मतलब ये लाइन ऑफ कोड पब्लिक में आते ही लिख दूं, डिस्टेंस बनाने के बाद लिख दूं, 2 डिस्टेंस बनाने के बीच में लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखने से फर्क पड़ेगा, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन लिखा है आप ध्यान से देखिए, इसका नाम भी वही है जो क्लास का नाम है। ठीक है, सो order is not important, what is important is the purpose. One thing to note here is the name of destructor is against that of the class. You cannot give it a different name. इसका नाम भी वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। The only difference between this destructor and constructor syntactically is this wave sign. Now question is, what is the job of this destructor? First thing, constructors are called at the time of creating objects, and destructor is called once the job of your object is over, means once you move out of the block where the object is created. जिस ब्लॉक में ऑब्जेक्ट बनाया था, ब्लॉक मतलब करली ब्रैकेट्स वाली दीवारें, स्टार्टिंग करली एंड एंडिंग करली ब्रैकेट, जैसे ही आप उस ब्लॉक से बाहर निकलते हो, योर लोकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड, and when it gets destroyed, just prior to the destruction, this destructor gets called, and whatever line of code you have written in the body of this destructor will get executed. जो कुछ आप इसकी बॉडी में लिख के आएंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी सवाल यह है कि मैंने इसकी बॉडी में क्या लिखा है, एक सिंपल सा मैसेज, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैं मैसेज तो हेलो वर्ल्ड भी दे सकता हूँ, मगर सवाल ये होता है सर क्या इसके लिए बनाना है, ये मैसेज देने के लिए बनाना है, इससे अच्छा तो ना ही बनाए। तो बात यह है बेटा कि आपने अपने कोड के अंदर जो भी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ऑल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एट कंपाइल टाइम, फाइन, बट वेरी सून यू विल बी लर्निंग डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, आपकी मेमोरी रन टाइम पे अलॉट होगी। ठीक है, और रन टाइम पे जो मेमोरी आप अलॉट करते हैं उस मेमोरी को फ्री करना आपकी ड्यूटी होता है। ये आपने सी में सीखा था। इन सी लैंग्वेज यू हैव लर्न calloc, malloc and realloc functions, and your teacher might have taught you that whenever you use calloc and malloc, calling free function becomes your responsibility. जो मेमोरी कंपाइल टाइम पे बनती है, काम खत्म होने पे वो मेमोरी अपने आप फ्री करा दी जाती है, कंपाइलर उसे फ्री कर देता है। मगर जो मेमोरी हम malloc या calloc से बनाते हैं, C++ में न्यू से बनाते हैं, न्यू ऑपरेटर आप पढ़ोगे आगे भी, तो जो मेमोरी आप डायनेमिकली बनाओगे उसको फ्री कराने की जिम्मेवारी और ड्यूटी आपकी होती है। ठीक है, तो आप अगर भूल गए तो क्या होगा, आपकी मेन मेमोरी का उतना सा पोर्शन किस स्टेटस पे चलता रहेगा, ऑक्यूपाइड। मतलब आपकी मेमोरी रैम में से मेमोरी लीक होती रहेगी, एक समय आएगा सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि आपके पास मेन मेमोरी में जगह ही नहीं होगी। आप वेरिएबल बनाते तो जा रहे हो डायनामिकली, मगर उनको फ्री नहीं कर रहे हो, वो आप भूल जाते हो। ठीक है, तो इंसान तो चीज़ों को भूल सकता है ना। फ्री को कॉल करना इंसान की ड्यूटी, डिलीट लिख के डिलीट कराना इंसान की ड्यूटी, मगर इंसान अपनी ड्यूटीज पूरी करते करते कभी कभी भूल जाता है। ठीक है, बट वी ऑल नो दैट कंप्यूटर वंस प्रोग्राम नेवर फॉरगेट्स थिंग्स। That is the reason we will be creating destructor in the class, and the delete statement or the free statement, whatever it is, will be written in the body of destructor, so that once the job of object is over, destructor will be called automatically. This is guaranteed, it will be called automatically, and the code to free the memory occupied by the object will happen. तो जो मेमोरी इसने खा रखी है वो फ्री हो जाएगी। अभी यहाँ तो कोई हमने कैलॉक यूज नहीं किया है,
अपने प्रोग्राम में कहीं पे malloc यूज नहीं किया, कहीं पे न्यू यूज नहीं किया, तो डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखते हैं? और हेलो वर्ल्ड ये लिख दो डिस्ट्रक्टर कॉल। कोड को रन करके आप देख लीजिएगा। मेन जब रन हो जाएगा तो लास्ट में आपने अगर 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे तो आपको 2 बार मैसेज आएगा डिस्ट्रक्टर कॉल डिस्ट्रक्टर कॉल। अगर आपने 4 ऑब्जेक्ट बनाए तो 4 बार मैसेज आएगा डिस्ट्रक्टर कॉल, ऐसा 4 बार होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए। एक ही ऑब्जेक्ट बनाया तो ये मैसेज एक बार आएगा। फॉर एवरी ऑब्जेक्ट दिस डिस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एंड व्हेनेवर इट विल बी कॉल्ड यू विल गेट एन आउटपुट मैसेज डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। एम आई क्लियर? चलिए, तो ये डिस्ट्रक्टर टॉपिक था आपका बेटा। इसके बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं, ध्यान से देख लो। डिस्ट्रक्टर्स दे आर अगेन स्पेशल फंक्शंस, special in a sense they have same name as that of class but preceded with a tiled character। ये wavy जो साइन है wave वाला। no arguments, destructors cannot be, we cannot pass in arguments। मतलब कंस्ट्रक्टर में तो आर्ग्यूमेंट्स जा सकते थे ना, डिस्ट्रक्टर में नहीं जा सकते। अब डिस्ट्रक्टर में क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं जा सकते तो इसकी ओवरलोडिंग ही नहीं हो सकती, है ना। ये भी रिटर्न, इनका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता क्योंकि इन्होंने रिटर्न क्या करना है, इनका काम क्या है? मेमोरी को फ्री करना, रिटर्न करना इनका जॉब ही नहीं है। तो रिटर्न टाइप नहीं होता, वॉइड भी नहीं होता। यू कैनॉट ओवरलोड देम बिकॉज यू कैनॉट पास इन आर्ग्यूमेंट्स। अब सवाल ये है डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल क्यों नहीं है? डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? कर देना, उसकी मेमोरी को रिक्लेम कर लेना। डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? मेमोरी को रिलीज कर दिया, मेमोरी फ्री, काम खत्म। तो डिस्ट्रक्टर 4 तरह का क्यों चाहिए? इसलिए ओवरलोडिंग इज नॉट अलाउड। बिफोर द सिस्टम रिक्लेम्स ऑब्जेक्ट्स मेमोरी, reuse memory for new objects mainly used to deallocate memory। The only job of destructor is reclaiming the memory back। The memory occupied by the object is reclaimed back, मतलब taken back, free हो जाता। So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.